Hello Mataji, you're watching Northeast Express on HornbillTV. Assam is celebrating one of its most significant festivals, Magh Bihu, with traditional fervor and widespread community participation across the state. Following the Uruka celebrations on the evening of January 13, people gathered early Wednesday morning to light the traditional Magh bonfire, a central ritual of the vibrant Assamese festival. Magh Bihu, also known as Bhogali Bihu, marks the conclusion of the harvest season and is celebrated throughout Assam. One of the most prominent customs is the burning of the Magh, large cone-shaped structures made of bamboo, wood and the thatched hay. The ritual symbolizes prayers offered to the fire god for prosperity, good health and abundance in the coming year. In Guwahati's Karguli area, residents assembled at dawn to light a traditionally built Magh. The event was enthusiastic participation with community members gathering around the bonfire, exchanging festive greetings and celebrating together. Community bonding remains a key element of the Magh burning tradition. The construction of the Magh is typically a collective effort with villagers coming together to gather materials and build the structure. The bonfire serves as a focal point for social interaction, accompanied by traditional songs, prayers and celebrations. His Guwahati MLA Siddhartha Apatacharya said, Magh Bihu is observed to celebrate the successful harvest and is marked by shared meals and collective festivities. He noted that the Belagar service as a common gathering place for villagers and emphasized the importance of worshipping fire, which he described as the foundation of civilization. Sharing her views, Bishaka Mahanta said Magh Bihu is celebrated after the completion of farming activities and the harvesting of new rice. She highlighted that the festival centers on food and gratitude and added that even in urban settings, people continue to uphold the traditions, celebrating the festival on both small and large scales. The Magh bonfire continues to remain a powerful symbol of Assam's rich cultural heritage and collective spirit during Magh Bihu celebrations. Magh Bihu is celebrated to enjoy and rejoice the successful harvesting that is done. So it is full of food, it is full of different vegetables, and the Velagar is a place where everybody from the village used to gather together and celebrate in a community way. So we are just continuing with the tradition. Oh, it's very, very important because here we worship fire, which is the basic of all civilization. हमारा ये बिहू, ये भोगाली बिहू 14 इयर्स, अभी 14 इयर्स हो गया इस बार। 14 इयर्स में ये भोगाली बिहू सेलिब्रेशन हुआ है, खूब धूमधाम से सेलिब्रेशन हुआ है। एक्चुअली ये एक असमिया परंपरा है, मेजी और भेलाघर। मेजी हो थोड़ा उसी के निर्माण करता है और ये खेर से खेर इसलिए ये सब सामान मिलाकर मेंबर करता है। ये एक परंपरा है, लेकिन इसका कोई जो वैदिक नियम से ये प्रज्वलन कर रहा है। लेकिन मेजी एक परंपरा है, मेजी तो असमिया का परंपरा है। वह मेजी को अग्नि देवता को प्रणाम करके ये मेजी जलाता है प्रत्येक बार। और अभी भी एक बार भी हुआ है और इस बार 14 इयर्स के लिए ये बिहू सेलिब्रेशन है। बहुत कार्यक्रम रहेगा यहाँ में। अभी माघ बिहू में सब लोग जब खेती मतलब हो जाता है, उसके बाद जो राइस एंड ऑल निकलता है फर्स्ट, वो हम लोग सेलिब्रेट करके खाते हैं। दिस इज़ बिहू। ये बिहू सिर्फ खाने के लिए है और हम लोग ऐसे ट्रिब्यूट करते हैं। अगर गांव लोग में होता है तो हम लोग के खुद के ट्रेडिशन को भूल नहीं सकते, तो हम लोग शहर में भी सेलिब्रेट करते हैं, वेदर इट इज स्मॉल और बिग। ये हम लोग का ये है, ये हम लोग का ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल हम लोग ये काम करते हैं, ये फेस्टिवल मनाते हैं। मतलब ये हम लोग गांव से लाते हैं, गांव का आदमी को ऑर्डर देकर लाते हैं, हम यहाँ मंगाते हैं, मंगा के जलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे असामी सोसाइटी में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये। Bhogali Bihu of Magh, marking the end of the harvesting season, was celebrated with great enthusiasm at the National Institute of Technology and IT, Silchar.
campus on Wednesday. The festival, organized by the students, was held at the institute's football ground and witnessed the participation of hundreds of students and faculty members. Participants danced to traditional Bihu songs and paid rich tributes to their icon, late Zubin Kark. As part of the celebrations, a traditional Magh bonfire was lit after performing rituals and offering prayers to the god of fire. The festivities also included feasting with traditional delicacies such as pitas procured for nearby village vendors. Students who were away from their homes actively took part in the celebrations, making the occasion a vibrant and memorable one on campus. সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি সকলোৱে জানো কাতি বিহু কঙালী, মাঘ বিহু ভোগালী আৰু বহাগ বিহু ৰঙালী। মাঘ বিহু ভোগালী আমি এই কাৰণেই কোৱা হয়, কৃষকে শস্য আনি ভঁৰালত ভৰাই, সেই কাৰণে আমি সকলোৱে পিঠা পনা বনাই আমি সকলোকে দিব পাৰো, জলপান জা জলপান পেট ভৰাই খোৱাকৈ দিব পাৰো, সেই কাৰণে ভোগালী বুলি কোৱা হয়। আমি এই NIT বাকৰিত যদিও আমাৰ ভঁৰাল হিচাপে আমাৰ নাই, আপুনি জানে আমি ষ্টুডেণ্ট আৰু আমি ফেকাল্টি আমি কোৱাৰ্টাৰত থাকো, আমাৰ মিক্সাৰৰ বাহিৰেতো উপায় নাই পিঠা বনাবলৈ, সেই কাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ফেটাৰ্নিটিয়ে ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰা গৈ পিঠা পনা আনে আৰু তাকেই লৈ আমি সকলোৱে ভোগালী বুলি বিহু জা জলপান খাওঁ। এইখিনিত আমি ক'ব বিচাৰিছো যে আমি কেৱল অসমীয়াখিনিয়ে উদ্যমী হৈ বিহুটো আমি উদযাপন কৰিবলৈ লওঁ। NITত প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখি আহিছো আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্ট ফেটাৰ্নিটি এইখিনি কৰে, আয়োজন কৰে আৰু শিক্ষক সকলোবিলাক আহে। কিন্তু কথাটো এইটোৱে হৈছে, অকল আমি বিহু বুলি ক'লে অসমীয়া মানুহখিনি ইয়াত নাই। আপুনি দেখিবলৈ পাব NIT মই আগৰ পৰাই কওঁ এখন হৈছে মিনি ইণ্ডিয়া। আমি সকলোবিলাক লগ লাগি আমি উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে। কিন্তু এইবাৰ আমি এটা কথা ক'বই লাগিব, আমি দেখিছে আমাৰ ভেলাঘৰৰ ওচৰত আপুনি দেখিছে আমি জুবিনদাৰ ফটো আছে। আমি একচুৱেলি সকলোৱে এইখিনিৰ লগতে জুবিনদাৰ খুব একচুৱেলি এটা ন্যায় পাওঁ, সেই কথাটো আমি সকলোৱে ভাবি আছো। যিহেতু আমি যিমানটো উল্লাস থাকিব লাগে, সেই উল্লাসটো একচুৱেলি বাহ্যিকভাৱে আপুনি দেখিছে যদিও মনৰ ভিতৰৰ পৰা সেই বস্তুটো আমাৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হিচাপে আহি পৰা নাই। আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ তেখেতৰ ন্যায়ৰ বাবে আৰু সকলোলৈকে মই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকক অসমবাসী ৰাইজলৈ সদৌ ভাৰতলৈ সকলোলৈকে আমি আমাৰ NITৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। Governor of Manipur Ajay Kumar Balla on Tuesday honored 53 distinguished and gallantry award-winning Armed Forces veterans along with Veer Nadis during the 10th Armed Forces Veterans Day 2026 program held at the Palace Auditorium, MSFD's Imphal. In a strong message from the state's highest office, the governor said that nation's freedom, unity and democratic foundation stand secured due to the sacrifice, discipline and service of the armed forces, adding that India's debt to its veterans and war widows is permanent and non-negotiable. Balla underlined that Veterans Day is not merely symbolic but a reminder of the responsibility of the government and administration to ensure timely delivery of welfare support of those who serve the nation, including their families. He also highlighted the historic contribution of Manipuris in India's defense legacy, stating that the people of the state have consistently served on the most challenging front lines and played a crucial role in strengthening national security. In a significant crackdown on extortion networks and organized crime, Manipur police arrested 3 active cadres of KYKL Tripura from different locations in Imphal West District during intelligence-based combing cordon and search operations on Tuesday. The arrested individuals have been identified as Kidlakpam Tailepa Mangang alias Toiba or Lamyanpa 23 of Kwaiketel Heno Kongnempe apprehended from Kangapam Laikai. Kondocham Godi Meite alias Pirepa 23 of Bishnupur Ward number 10 Joypur Kuno arrested from Kwaiketel Tokchom Laikai and Laisham Ichal Devi alias Sangita 30 of Wabakai Terapi Shak Kakching district currently residing at Kwaiketel Akam Laikai arrested from Kwaiketel Bazaar. Police seized 3 mobile phones, 4 SIM cards, ₹6,000 in cash and a Yamaha motorcycle from the accused. According to authorities, the arrested cadres were allegedly involved in recruiting new members, extortion in valley districts and providing logistic support to the organization. Security forces have intensified search operations and area domination in fringe and vulnerable areas across districts.
In a parallel operation targeting illegal cultivation, a combined team of security forces and the Forest Department destroyed around 65 acres of poppy fields at the Gavok Hill range under Chakipkarong police station in Chandel district, along with 2 temporary huts, poppy pots and seeds found on site. On the same day, another joint operation by security forces, the Forest Department and an executive magistrate destroyed approximately 30 acres of poppy fields at the Sadim Hills range under Senapati police station in Senapati district. Tripura police on Tuesday night seized a number of suspicious tools and equipment suspected to be used for manufacturing arms from the residence of a man in West Tripura district. The seizure was made from the house of Balbir Singh, a resident of Kartik Chowmohani area under Amtali police station. Following specific intelligence inputs, Sub-Divisional Police Officer of Amtali, Paramita Pandey, said that the police had received secret information about the presence of arms-related materials at Singh's residence. Acting on the information, a police team led by Sub-Inspector Mrinal Paul rushed the spot and conducted a search operation at the house. During the search, the police recovered 7 cartridges cases, bullets and various tools and equipment which appeared to be meant for arms manufacturing or related activities. Pandey said the seized tools and materials would be sent for forensic examination to ascertain their exact nature and purpose. She added that Balbir Singh was arrested from his residence in connection with a seizure and would be produced before a court. According to the police, different types of tools were found stored inside house, raising suspicion about their possible misuse. A case under relevant provisions of the Arms Act has been registered against Singh at Amtali police station. Further investigation is underway to determine whether the accused was involved in any wider illegal arms-related activities and to trace the source of ammunition recovered. অ্যাকচুয়ালি আজকে সন্ধ্যা নাগাদ আমতলী থানার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আসে যে কার্তিক চৌমনি ওইখানে বলবীর সিং এর বাড়িতে আর্মস জাতীয় কিছু সামগ্রী মজুদ থাকতে পারে। তো ইনফরমেশনটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমতলী থানা থেকে একটা টিম আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ সাব ইন্সপেক্টর মৃণাল পাল ওই জায়গাতে ইমিডিয়েটলি ছুটে যায়। ছুটে ওই বলবীর সিং এর বাড়িতে ভালো করে সার্চ করে বলবীর সিং এর বাড়ি থেকে আমরা 7টা কার্ট্রিজ কেস প্লাস কিছু বুলেট জাতীয় আর কিছু ইকুইপমেন্ট যেগুলি দেখে লাগছে যে এগুলি দিয়ে আর্মস ম্যানুফ্যাকচারিং আইটেমস এর মতন লাগছে। তো সেগুলিকে আমরা সিজ করি এবং বলবীর সিংকে ওনাকে আমরা অ্যারেস্ট করি। বাকি যে টুলসগুলো আছে ওইগুলোকে আমরা ফরেন্সিকে পাঠাবো, পাঠিয়ে এগুলি এক্সামিনেশনের পরে রিপোর্টে আমরা বলতে পারবো যে এগুলি দিয়ে কিভাবে ইউজ করা হয় এবং এগুলি দিয়ে কিভাবে আর্মস তৈরিতে এগুলি ইউজ হয় কি হয় না সেটা আমরা এফএসএল এ পাঠিয়ে পরিষ্কার জানতে পারবো। আর বলবীর সিংকে কালকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করে ওনাকে রিমান্ডে এনে বাকি যে ওনার বিরুদ্ধে যা যা ওনার সঙ্গে কেউ জড়িত আছে কি না আছে সেটা আমরা চেষ্টা করবো। এখানে কার্তিক চৌমনিতে উনি থাকে, তো সেখানে ওনার বাকি ওনার ডিটেলসটা আমরা কি করে সে এরকম কিছু করে না, সে এরিয়াতে নরমালি থাকে। এখানে বিভিন্ন রকমের টুলস আমরা এখানে পেয়েছি, প্লাস যেটা 7টা যে কার্ট্রিজ কেস আমরা পেয়েছি, কিছু বুলেট মতন দেখতে আইটেমস আমরা পেয়েছি। তো সে প্লাস আরো কিছু বিভিন্ন ধরনের টুলস ইকুইপমেন্ট যেগুলি দেখে লাগছে এগুলা ইউজ হয় ফর প্রিপারেশন অফ আর্মস। হ্যাঁ, ওনার ঘরেই ছিল। এই তো প্রথম ফার্স্ট টাইম ত্রিপুরাতে এরকম সরঞ্জাম তৈরি, বন্দুক তৈরি সরঞ্জাম পাওয়া গেল বা বন্দুক তৈরি কারখানা কিনে নিতে পারি যে একটা আপনারা সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা সেটা এক্ষুনি যেটা পেয়েছি আমরা রিসেন্টলি আমরা এখান দিয়ে পেলাম। কি ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে? আমরা আর্মস অ্যাক্টে বলবীর সিং এর এগেইনস্ট একটা মামলা নিই। Manipur Governor Ajay Kumar Balla and Union Minister of Development of Northeast Region Jyotiraditya M. Skinda on Tuesday co-chaired a high-level review meeting through video conferencing to assess the state's proposal for the overall development of polo in Manipur. Held at the conference hall Lok Bhavan, Imphal, the meeting examined the proposal submitted by the Manipur government for a comprehensive polo development plan aimed at strengthening infrastructure, training and talent development linked to structured performance outcomes. According to a press release issued by the Governor's Secretariat, the Union Minister advised the state team to prepare the proposal in a phased manner, ensuring that talent from various districts is identified through geographic clusters and systematically linked to centers of excellence.
Governor Bala assured that the suggestions would be incorporated in the forthcoming stages of planning and implementation. The meeting also stressed the need for efficient and result-oriented execution to accelerate overall development in the state. The Chief Secretary to the Governor and other senior officials attended the review. The Kuki-Zo Council (KZC) on Wednesday organized a massive public rally in Churachandpur district, reiterating its demand for an expedited political settlement for the Kuki-Zo people, including the call for a union territory with legislator. Addressing the gathering at the Peace Ground, Ginza Walzong said similar rallies were being organized across Kuki-Zo inhabited districts. He said the rally was intended to urge the centre to speed up the political process, highlighting the impact of the ongoing unrest. Walzong said many families have suffered due to loss of lives and widespread destruction of property. He also claimed that over 40,000 people from the community have been displaced. The rally, supported by the Indigenous Tribal Leaders Forum (ITLF), began around 11 a.m. and was coordinated by Ginza Walzong, spokesperson of both ITLF and KZC. Thousands of participants assembled at three designated points: Renkai Community Hall, Koite Playground and Selmat Playground, before marching towards Peace Ground, Toibong, where the rally culminated in a public meeting. During the march, slogans demanding separate administration and union territory status echoed throughout the rally. The rally concluded with a public meeting organized by the ITLF, addressed by Heinleng Tanglek, chairman of Kuki-Zo Council, along with leaders from philanthropic organizations and student bodies. Later, KZC and ITLF leaders submitted a memorandum addressing to the Union Home Minister, routed through the Deputy Commissioner Churachandpur after the rally. A mattress manufacturing unit at Byrnihat was completely destroyed by a fire on Wednesday after flames reportedly erupted from a machine while 4 mattresses were being cut inside the factory. Workers initially tried to extinguish the fire, but when their efforts failed, all employees were safely evacuated from the premises. The incident took place around 3 p.m. shortly after workers returned from their lunch break. The factory, Umatad Foam Industries, is owned by Adarsh Junjunwala and is located at Amchok village in Byrnihat near the State Bank of India. According to the factory owner, the fire originated from a foam cutting machine and spread rapidly, engulfing the entire unit and destroying all machinery and materials inside. While the exact extent of damage is yet to be assessed, preliminary estimates indicate losses amounting to several crores of rupees. Firefighting teams from the Byrnihat police outpost along with fire tenders from Narbong and Assam rushed to the scene and worked to contain the blaze. Despite their efforts, the factory and its content were completely gutted, causing significant losses to the owner. Meanwhile, the Rangpa Snong, village head of Amchok Pahuraju Chuaira, thanked local residents for their support during the incident. He also expressed appreciating for the prompt response of the Byrnihat police and the fire and emergency services, whose timely action prevented the fire from spreading to nearby residential areas. काम चालू पुलिस दुटा पार गल ना
इस पर हम होते ही वो फॉर्म का जो उसके वहाँ पे जो ब्लॉक कटिंग रहा था ना, वहाँ पे कुछ स्लीपर रखे थे फॉर्म के, तो वहाँ आग लगी। आग लगने के बाद वो लड़का मतलब फॉर्म का इधर कटा को तब तक चिल्लाने लग गया लड़का लोग। हम लोग वो जो फायर एक्सटिंग्विशर लेके बुलाने पर लगी, तब तक टीना में पूरा पकड़ लिया, इतना जोर से पकड़ा जितना आप बोलने के मतलब मशीन से आपका मतलब इलेक्ट्रिक का जो था शॉर्ट सर्किट हो गया। वो मेन एमसीबी के वहीं से लगा, एमसीबी से जाके मतलब आपको मशीन का आपका जो फॉर्म का जो स्लीपर रखा था वहाँ पकड़ लिया। फिर वहाँ से मतलब आपको वहाँ से मतलब क्या हुआ, अब जो फॉर्म में इतना डर लग गया, जितना फायर मारा हम लोगों ने उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। और जब वो पकड़ा गया तो इधर में बोंडेट सामने था, बोंडेट को वहाँ पकड़ लिया। और बोंडेट को वहाँ से पकड़ा तो मतलब पूरा हम लोग भी आगे नहीं जा पाया, इतना आग हो गया। हम लोग का ऊपर भी आने लगे था, तो हम लोग लड़का लोग को सबको बाहर निकल, 4 लड़का को ही हम लोग वो किया था। कंपनी में फायर इक्विपमेंट्स है वही फायर एक्सटिंग्विशर जितना था सब फायर एक्सटिंग्विशर पूरा खाली कर दिया। उसी को मार के हम लोग फिर टीना के लेबर क्वार्टर के ऊपर टीना के में था, वो टीना के वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा लगा हुआ था, वहाँ पानी और फायर एक्सटिंग्विशर मारा उसको तो बुझा दिया। लेकिन ये फॉर्म का अंदर वाला कंट्रोल कोई इंजर्ड हुआ नहीं हुआ, सब लड़के सब बाहर निकल गए। अभी सब मैट्रेस में है अंदर, सब सामान को वो कर रहे साइड करने लगभग कितने अभी सर वो तो बोलने वाले, लेकिन कल ही प्रोडक्शन हुआ था। कल मोटा मोटी 12 टन का प्रोडक्शन हुआ था। 12 टन का तो इसके कल फॉर्म तो ऑलरेडी था ही, और 12 टन का कल किया था। 12 टन प्रोडक्शन कल हुआ है, इसका भी कटिंग हो ही रहा था। आज बिहू था, आधा तो लड़का लोग छुट्टी गई, तो उसका 8-10 लड़का हम लोग का यहाँ का और लोकल लोग थे, वो लोग ही काम कर रहे। तो फर्स्ट हाफ में तो काम ही नहीं हुआ जाता, सेकंड हाफ में लंच के बाद आके काम करें और उसी टाइम में वो हो गया। ये आपका 2:29 पे 2:29 तब, क्योंकि उसी टाइम हम फ़ोन किया था फायर ब्रिगेड में, इसमें फ़ोन करा था, वो टाइमिंग हमको पता है, तो 2:29 के करीब अभी नहीं बोल पाएगा। लेकिन कितना है कि फॉर्म जो था हम लोग का पहले का तो फॉर्म है, वो स्टॉक कितना देखना पड़ेगा। कल 12 टन का कल प्रोडक्शन हुआ। Kalau mungkin ini bisa Magh, ini don ke program apa sih? Kodam, itu kau nayo kapol, nanti nayo ba perlu kan yang pasti dia jamin. Masa itu kapol bidangnya mut bamja, teman saya ni happy bekerja pakai ni hapan mare sini. Sebut pun nayo, kita bagi member sekretari begini gila don lupa, dan menyerap, dia kadim. Lihat ketik, memang pasti pakai ni ketika factory ke pasna mattress di form factory, try Bihu ada junjun wala. Entah hi masuk kita sama nayo tentu kita kalau clean di Indonesia seperti zaman ini company yang bakal di nak sakit. Ya kata buat ni bentar kita punya Byrnihat ni kita detail sebentar. Entah hi, kita kamdan lagi. Kila era bro, bukan kila era bahang kami. Am beli suabun poi fire brigade di bukan kila wan kila erti kila zang berke Don bang ni, kami penjaya ke keting sosial kena bahaya betul. Aku beli terbang kam kena sekarang di banyak sekarang kan pergelai ban era ban beli begitu. Bukan mesin jaya kemudian gila tip soal mesin informasi dalam pasang mesin ini itu gila tip ya SP office kayak di sini nanti untuk bermanfaat kawan napo fire brigade untuk apa Byrnihat ini sudah apa. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.